हेलो। ठीक है उसको बैलेंस कर ले। Ladies and gentlemen, welcome to match number 7 of the Soneri Bank presents MCL T20 Lace Cup 2026. It's Mizan. I beg your pardon, it's Bank Islami facing AJR. AJR won the toss and has elected to bat first. It's going to be a thrilling contest, ladies and gentlemen. What are we going to see on the very first ball? Is it going to be a boundary? Is it going to be a six? Is it going to be a wicket? Or is it going to be a boring dot ball? Once again, ladies and gentlemen, let me tell you, it's the 7th match of the league stage where AJR has won the toss and has elected to bat first. Ladies and gentlemen, it's the Riaz duo who has walked to the middle of the ground. Imran Riaz is going to be facing the very first ball. It's Naveed running into ball to Riaz. What is it going to be? He defends it with the straight pad and it's a dot. We did not really see much action on the very first ball, but here he comes, Naveed comes, running it to deliver the second ball. What is it going to be? Misses the bat, goes on to hit his pads, but it was a little too high. There was a slight appeal, but the umpire did not look convinced at all. It's another dot. पहली दो गेंदें, पहली दो डॉट्स. अभी तक एक भी रन नहीं आया AJR के स्कोर कार्ड पर. टाइट लाइन रखते हुए नवीद स्टंप टू स्टंप जा रहे हैं, जरा सा भी रूम नहीं दे रहे. Here he comes, third ball, flicked away, it's in the air. What is it going to be? Ooh, nearly caught. The ball bounces right in front of the fielder. Maybe he should have done a little better. Have a look at this replay. Bags पर गेंद थी, flick किया था, and the ball was just an inch away from the fielder. Misjudge कर लिया. This could have been an early wicket for AJR, an early breakthrough for Bank Islami, but in the end, it's a missed chance. It's a dropped one, and it's one run being added to the scorecard. Finally, to AJR's. फिर से कोई भी रूम नहीं दिया. एक और डॉट बॉल, 4 गेंदें, एक ही रन आया है महज. नवीद की अच्छी गेंदबाजी अभी तक, जरा भी रूम नहीं दे रहे. बॉडी को अटैक कर रहे हैं, स्टंप टू स्टंप जा रहे हैं. ही इज कीपिंग द लाइन टाइट. द लेंथ हैज बीन ऑल राइट एज वेल. विश आई कुड से द सेम अबाउट द फील्डिंग. Penultimate delivery of the first over. Naveed has been extremely tidy so far. Can he finish it up? Real nice.
It was there to be hit, and what an elegant shot towards the covers region. A beautiful, beautiful, beautiful boundary. The first for AJR. And just have a look at it. A shot of authority, a shot of elegance. Your textbook cover drive. Point और extra cover के जानिब 4 runs. पहली बाउंड्री AJR की, पहली बाउंड्री रियाज की. आखिरी गेंद है. क्या होगा इस आखिरी गेंद पर? Once again targeting the legs. Hits it gently for a single. So 1 run to finish the first. After the first, it's 6 for no loss, AJR. Naveed का पहला ओवर काफी टाइडी था. I mean, he attacked the stumps, he attacked the body of the batter. जरा सा भी रूम नहीं दिया. एक गेंद थी जिसमें उन्होंने रूम दिया, and that resulted in a boundary. उसके अलावा it was a pretty tidy over. एक missed opportunity भी थी जिधर fielder ने misjudge किया, थोड़ा सा पीछे रह गए, and the ball ended up dropping right an inch in front of him. Would have been an early wicket, but it is what it is. मुजफ्फर आए हैं जी second over करवाने. न रन अप की जरा प्रैक्टिस करते हुए. It's Riaz on strike who has hit a boundary. 3 गेंदों पर 5 रन हैं इनके. AJR की कोशिश होगी कि पावर प्ले में जो रन रेट है इसको जरा बेहतर किया जाए. कम से कम 50-55 रन तो स्कोर करने चाहिए. AJR को जितनी तगड़ी ये बैटिंग रखते हैं और जितने तगड़े ये ओपनिंग डुओ है AJR का, they must be eyeing somewhat around 50 to 55 runs in the power play at least. Okay, ladies and gentlemen, we are finally about to resume the first ball of the second over. Muzaffar to Riaz. Room दिया था, लेकिन he hits it straight to the fielder at point जो कि दायरे के अंदर मौजूद हैं. This could have been a boundary. I must say, lucky for Muzaffar. Spinner आए हैं जी. रियाज की कोशिश होगी कि स्पिनर को अटैक किया जाए. दानिश मुजफ्फर. रियाज ऑन स्ट्राइक. ऑफ स्टंप के बाहर खेल जेंटली खेला इसको. एक और डॉट. So no run of the first 2. Can he maintain this for the next 4 deliveries? That's the question, ladies and gentlemen. Once again, it's Riaz. It's been played, and this time the fielder could not stop it. He did get his hand to it. जिसकी वजह से गेंद की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई. 4 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 रन्स लेने में कामयाब रहेंगे. थोड़ा अंडर आर्म्स एक्शन है इनका. चौथे गेंद लेग साइड की जानिब खेल दिया. 1 रन का इजाफा होगा. अभी तक 10 गेंदें हो चुकी हैं 7वें मैच की पहली इनिंग्स की, और इन 10 गेंदों में बैंक इस्लामी फील्डिंग को इतनी इंप्रेसिव नहीं रही. There was a missed catch, there was a missed fielding. 2 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ महज 10 गेंदों पर. Something you hate to see. The
delivery of the second over. सीधे बल्ले से किया आखिरी गेंद. So far 5 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 3 रन आए हैं. दानिश मुजफ्फर की काफी अच्छी गेंदबाजी रही है. अब आखिरी गेंद पर क्या अप्रोच होगी बल्लेबाज की? क्या आगे बढ़ेंगे? क्या एक बड़ी हिट के लिए जाएंगे? Ooh, it was a close one. There was a big scream from the bowler. Caught behind की opportunity थी, लेकिन जो wicket keeper थे नाकामयाब रहे to get a hold of the ball. In the end, it's a dot to finish the second. Let's have a look at the replay. अच्छी लाइन थी, अच्छी लेंथ थी, ऑफ साइड पर खेलना चाह रहे थे, and there was an edge. There was an edge, but the ball was bouncing a little too much for the keeper to collect it quite comfortably. 2 overs के बाद 9 बिना किसी नुकसान के AJR. And ladies and gentlemen, you are watching Soneri Bank presents MCL Night Tournament, brought to you by Lay's 2nd edition. And thanks to all our proud sponsors for making it possible. Naveed has come back into the attack. He continues his spell. He gave away only 6 runs in his first overs. पहली 6 गेंदों पर दिए 6 रन्स नवीद ने. दूसरा ओवर करवाने आए हैं. रियाज ने स्ट्राइक पर जो इनको एक बाउंड्री जड़ चुके हैं. I'm pretty sure कि अब अप्रोच थोड़ी मुख्तलिफ होगी. Never mind, once again attacking the stumps, once again keeping it tight and neat and tidy, and once again defended and given respect by Riaz the batter. A dot to begin the second of Naveed. सेकंड डिलीवरी इस बार कुछ ज्यादा ही बाहर करा दी. फिर से टांगों को टारगेट किया था, लेकिन इस टाइम चूक गए जरा सा. फाइन लेग के फील्डर गेंद को कलेक्ट करने में कामयाब. 2 रन्स का इजाफा होगा विद एन एडिशनल रन ऑफ अ वाइड. सो बगैर किसी इजाफे की गेंद में 3 रन्स का इजाफा हो चुका है जी AJR के स्कोर कार्ड में. ये जो एक्स्ट्रास होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर the worst to give for the fielding team. कभी भी अच्छा नहीं लगता जब आपकी पोजीशन को आप एक्स्ट्रास दे दो तो. So I must feel for the bowler because he has been pretty tidy, excluding the last one. Once again stumps पर थी और फिर से मिसफील्ड. फिर से फील्डर के हाथों में से गेंद गई बाउंड्री लाइन के जानिब. Could not really see it properly. Was it a missed opportunity? Was it a grounded one? But एक चीज that we know for sure is that there has been yet another misfielding. रियाज के बल्ले से एक और बाउंड्री, और वो भी नवीद को. जैसे ही नवीद की लाइन चूकी, जैसे ही नवीद ने वाइड कराई, उसके बाद रियाज का जो माइंडसेट था वो भी तब्दील हो गया. अगली गेंद पर 4 जड़ दिया, even though there was a misfield. Let's see what he does on the third ball. An aerial shot. Will this be a catch? No, it goes over the head of the fielder and races away over the long on boundary for another boundary. Back-to-back boundaries for Riaz. It was there to be hit. It was in the slot. And easy pickings for Riaz. He does not miss those, ladies and gentlemen. Can he get a hat-trick? Can he get a hat-trick? This time, it's the covers region that he targets, and this time it's an elegant shot to bring up his hat-trick of the boundaries. 3 geende, 3 chauke. Ladies and gentlemen, it's safe to say that Riaz has shifted his gear.
He is ready to rock and roll. Look at that. Knee down, perfect balance, perfect shot. What an elegant player he can be. Mohit Riaz, it is for you, ladies and gentlemen. What a player. नवीद के इस दूसरे ओवर की 4 गेंदों पर आ चुकी हैं 15 रन. Not something Naveed would have wanted, but can he finish it good? अभी भी 2 गेंदें पड़ी हैं. क्या होगा इस second last delivery पर? Full length delivery, almost a Yorker. सीधा फील्डर के हाथ में dot. The pressure is all on Naveed right now. मोहित की कोशिश होगी कि आखिरी गेंद पर एक और बाउंड्री आई जाए या फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी जाए, जबकि नवीद कम बैक करना चाहेंगे. नवीद चाहेंगे कि इस आखिरी गेंद पर अगर विकेट आ जाए तो क्या ही बात हो, लेकिन एक डॉट से ज्यादा तो वो नहीं चाहेंगे. लेट्स सी लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन जीता है इस बैटल में. Good delivery to finish his second. Giving away 15 runs in this over. After 3, it's 24 for no loss. Continuing his spell. लेकिन मोहित रियाज की जो मुझे बात अच्छी लगती है वो ये है कि मोहित has all the patience in the world. He does not rush to play any rash shot. He keeps himself very calm throughout his innings, and that's why he's able to perform consistently. पहली गेंद स्वीप करना चाह रहे थे, बहुत बाहर है जनाब, इस अपील का कोई फायदा नहीं. A dot. और अब मोहित के वालिद साहब इमरान रियाज स्ट्राइक पर हैं. पहली डॉट की है, अभी तक 5 गेंदें खेल चुके हैं. मेक इट 6 एंड ही हैज ओनली स्कोर्ड 1 रन सो फार. और पहली शॉट से ये तो हमें दिख गया है कि रन्स बनाना चाह रहे हैं. अब वो भी सेकंड डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, रूम था, खेल दिया. थर्ड मैन और पॉइंट के दरमियान 4 रन्स का इजाफा. पहली बाउंड्री इमरान रियाज के बल्ले से. एंड एज आई सेड, ही is about to get some boundaries to his name as well. It was a very loose one from Danish Muzaffar. I'm sure he must have realized it the moment the ball landed. But he will not miss his line too much. That's something we know for sure. He will come back, and he will come back strong. Ooh, tight line, and just as I said, he does come back. अभी तक अगर बैंक इस्लामी फील्ड में गलतियां ना करती तो AJR की 2 विकेटें गिरी हो सकती थी. There were 2 opportunities that were let go quite easily. Once again, he goes for a sweep. The fielder runs. Can he stop it? No, he cannot. He doesn't even get a hand to it, and he gets another boundary. Dot 4. 2 boundaries in this over for AJR. 2 boundaries for Imran Riaz. Look at that. A valiant effort. A very brave one, I must say, but in vain in the end. Look at the father-son duo enjoying their time in the middle of the pitch. Oh, it was there to be hit, but he could not really get his bat to the ball. There was no connection, and Danish survives this one. Danish survives. Ball of the 4th. Once again,
पॉइंट की तरफ खेला. वंस अगेन सीधा फील्डर के हाथ में. किसी रन का इजाफा नहीं होगा इस आखिरी गेंद पर. ओवरऑल 8 रन्स आए हैं दानिश मुजफ्फर के दूसरे ओवर से. इस इनिंग्स के चौथे ओवर से आफ्टर 4 AJR is 32 for no loss. ये लाइन सीधी है. दूसरा का कप्तान ने खुद को जिम्मेदारी दी है अब पावर प्ले के सेकंड लास्ट ओवर करवाने की, 5वां ओवर करवाने के इस इनिंग्स के. ज़ीशान जर्सी पर 0-1 लेकर क्या नंबर 1 बन पाएंगे? फर्स्ट डिलीवरी 1 रन. So many ones, ladies and gentlemen. It was Mohit Riaz on strike जिन्होंने पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वापस अपने वालिद साहब को थमा दी. So far, Imran Riaz has made 9 of 11 deliveries, whereas Mohit Riaz has scored 21 of 14. पावर प्ले में 11 गेंदें बचे. इनकी कोशिश होगी इन 11 गेंदों पर कम से कम 25 रन तो आए. It was down the leg side. What would the umpire say? He will open his arms and signal wide. Add a run to the scorecard, Mr. Scorer. And for Mr. Zishan, you'll have to reload it. Covers की जानिब खेल दिया. A valiant effort by the fielder. He is chasing it. Will he be able to stop it? No, he cannot. It's another boundary, and it's another boundary for Imran Riaz. एक फील्डर रोकने में नाकाम. दूसरे फील्डर उसके पीछे भागते हुए. काफी बहादुर एफर्ट थी. But in the end, could not really stop it. It's another 4 being added to the scorecard. 2 गेंदों पर 6 रन दे चुके हैं कप्तान. कोशिश करेंगे कि मजीद बाउंड्रीज लीक ना करें इस ओवर में. Third delivery on the legs, flicked away for a maximum. Or we'll have to wait for the umpire's signal. Let's see what he thinks of it. From the first look, it did appear as a maximum. He says otherwise. He signals a boundary. It's a 4. Back-to-back boundaries for AJR. Boundary check chal raha hai, ladies and gentlemen, this time. And it does appear to be a 6. It does appear to be a 6. The umpire disagrees, but here is another one. This time, there he leaves no room for discourse. He leaves no room for even some consideration. It's another one. And it's a maximum. This time it was a shorter one. It was there to be pulled, and so he did, quite powerfully. पहली 4 गेंदों पर 1, फिर वाइड, फिर 2 चौके, 1 छक्का. Fifth delivery, once again on the legs, once away, flicked away, and once again it's another boundary. Back to back to back to back, ladies and gentlemen. He is putting up quite a show. और देखते ही देखते मोहित से भी आगे निकल गए हैं इमरान.
It's rock and roll time, ladies and gentlemen. All the pressure of the world is on Zishan's shoulders right now. Will he be able to finish it good? This time it was once again on the pads. बल्ला लगने में नाकाम रहे, लेकिन लेग बाय उसकी सूरत में एक और बाउंड्री हासिल होगी। 24 रन्स का ये ओवर काफी महंगा साबित होते हुए बैंक इस्लामी के लिए। It's safe to say that it was a nightmare for Bank Islami, of course. After 5, AJR is 56 for no loss, thanks to Zishan and his over where he gave away 24 runs, and Imran Riaz for striking the ball quite magnificently. अभी भी पावर प्ले की 6 गेंदें बची हैं। मोहित रियाज होंगे अब स्ट्राइक पर। And ladies and gentlemen, let me tell you that he is a man who does not fear playing those big shots. He is a man who can hit the ball long, hit the ball big, hit some maximums. And we might see a display of fireworks in these last 6 deliveries of this power play. Waqas has come to bowl this one. Right arm fast medium. Right arm medium fast. Waqas आए हैं जी पावर प्ले की आखिरी 6 गेंदें डिलीवर करने। स्ट्राइक पर हैं मोहित रियाज। 14 गेंदें खेलकर 21 रन्स बना चुके हैं, जबकि उनके पार्टनर, his father, Imran Riaz, has scored 31 of 16. Ladies and gentlemen, what are we going to see in these last 6 deliveries of the power play? First ball, it was a short one. It's been pulled away. Will this be caught or will it be a boundary? It's a boundary, ladies and gentlemen. It's a boundary. They are dealing in boundaries right now. आखिरी 5 गेंदों पर बाउंड्रीज ही आई हैं AJR के लिए। Short game थी, लेकिन as I said earlier, that Mohit is the kind of a man who does not shy away from hitting the ball big and long. He does not get afraid of the short ones. He hits them quite long. पहली बॉल 4। अब क्या लाइन, क्या लेंथ टारगेट करेंगे वकास? Once again shorter one, once again pulled, and this time, ladies and gentlemen, it's a mammoth of a 6. What a big one. इसके लिए तो अंपायर की तरफ नजरें करने की भी जरूरत नहीं। क्या खूबसूरत शॉट लगाई है, and he is making it rain. He is only dealing in 6s right now, ladies and gentlemen. What a display of sheer hitting, dominance and authority by these two batters. दोनों बल्लेबाज 16 गेंदें खेलकर 31 रन्स बना चुके हैं। Quite identical चल रहे हैं ये father son duo. पहली 2 गेंदें दोनों शॉर्ट थी, दोनों बॉडी पर थी, दोनों pulled away for boundaries गई हैं जी। अब वकास तीसरी गेंद कराने किस माइंडसेट से आएंगे? थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगी अपनी लाइन और लेंथ इनको। Mohit, like an eagle, scanning the field, hunting down his prey. कौन सा एरिया अब टारगेट करेंगे जी? वकास की गेंद। This time once again it was a shorter one, but this time he shows his elegance and class कि मैं सिर्फ एक दायरे में नहीं खेल सकता। थर्ड मैन की जानिब 4 रन्स बैक टू बैक बाउंड्रीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर मोहित रियाज। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो आखिरी 6 गेंदें हैं, इनको ये ऐसे टारगेट करेंगे कि लग पता जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह लेट कट किया, क्या खूबसूरती से, एक खूबसूरत शॉट। यकीन करें देखकर दिल खुश हो गया। पहली 3 गेंदों पर 14 रन्स। He's turning out to be an even bigger of a nightmare for Bank Islami than Zishan.
Oh, there was an edge. There was an edge. But once again, the keeper could not hold on to it. Once again, it has been let down and let go, ladies and gentlemen. And once again, there are some runs being added to AJR's scorecard. Not something you like to see if you are a member of the Bank Islami squad. If you are a supporter of this team, there was a big, thick edge. And the body of the keeper was going in one direction and the hands were going in the completely opposite direction. I must say, he needs to show better technique if he wants to catch those balls. मोहित ने अपनी इंटेंट में कोई कमी नहीं की. पहली 4 गेंदें बड़ी शॉट के लिए गए हैं. It was a slower one and another boundary. And another boundary. How many times will I say this, ladies and gentlemen? But this man is not stopping at all and we do not want him to either. देखते ही देखते 19 गेंदों पर 41 रन्स बना चुके हैं मोहित. Somebody give this man a contract. Somebody get him into the PSL. Ladies and gentlemen, this is MCL for you. You will not see such entertaining and thrilling cricket anywhere else in the corporate scene in Pakistan. Last delivery of the power play. Mohit, ooh, he wanted to hit it big, but there was not enough good timing, you know. In the end, सिर्फ 1 रन का ही इजाफा होगा. 21 रन आते हुए वक्कास के इस ओवर में पावर प्ले के इख्तिताम पर AJR ने बनाए हैं 77 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. Ladies and gentlemen, welcome back to Soneri Bank presents MCL T20 Lace Cup 2026. It's match number 7 between AJR and Bank Islami, and so far AJR, after electing to bat first, has scored 77 runs in the first 6 overs. And they are looking to keep hitting the ball out of the park. Oh, this time there's a big appeal. Will the umpire give it? Will the umpire give it? It looked very tight. It looked very tight. And ladies and gentlemen, let me remind you that there is a facility available for the review. Will he go for one? No, he will not. He will not go for a review.
even though I think he should have, because this looked really tight. ज़्यादा से ज़्यादा missing leg stump हो सकता था, लेकिन it was a good off spinning delivery. Second गेंद मोहित रियाज ने सीधा लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, 1 रन का इजाफा होगा. जीशान आए हैं दूसरा ओवर करवाने. पहले ओवर में 24 रन्स पड़े थे इनके, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसके बाद सारा का सारा मोमेंटम जो था AJR की साइड पे चला गया था. उसके बाद जो भी हुआ वो तो आप सबने विटनेस किया ही किया, लेकिन हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट दिस. Height was in contention. Maybe it bounced a little too much. They managed to sneak another quick single. पहली 3 गेंदों में अभी तक जीशान ने महज 2 ही रन्स दिए हैं. So he is looking much better than he was in his previous over. मोहित रियाज 22 गेंदों पर 43 बना चुके हैं. He is eyeing yet another 50, yet another half century. And let me tell you, ladies and gentlemen, he has scored a lot of these and even a century in the MCL. आज क्या करेंगे? लेट कट किया है और बड़ी खूबसूरती के साथ एक और बाउंड्री. He moves to 47. Only 1 hit away from his half century. 3 runs away from his 50, and look at that. ज़्यादा दूर नहीं थी गेंद इनकी बॉडी से. लेट खेला और क्या खूबसूरती से खेला, प्लेस किया एक शाहीन की तरह. पहले पूरी फील्ड को स्कैन करते हैं, फिर जाकर अपना शिकार जो है उसको मार्क करते हैं कि मैंने इस रीजन में खेलना है. व्हाट अ प्लेयर. अगेन ऑफ साइड की जानिब खेला है. इस बार फील्डर गेंद को रोकने में कामयाब. सिर्फ और सिर्फ 1 ही रन का इजाफा. 5 गेंदों पर 7 रन. और अब इमरान रियाज आ चुके हैं स्ट्राइक पर, who is also playing at almost a strike rate of 200. 17 गेंदों पर 32 रन बनाए हैं. The ball coming in, played towards the point region. This will be a dot to finish the 7th after 7 AJR, 84 for no loss. रिजवान आए हैं इस इनिंग्स का 8वां ओवर करवाने. A flighted delivery. Once again there's an edge और कीपर की एक और in vain effort. Let me have a look at the replay. It was a flighted delivery. It was a good delivery, completely deceiving the batter who wanted to hit it big over the mid-wicket region. And look at that, ladies and gentlemen. Look at that. He was like a flamingo, but he could not get there. I would not really call it a missed opportunity because it was far away from the wicketkeeper, but a good effort nonetheless. Second delivery, once again flighted, once again
Mid wicket ke jaane khela and a 6. A maximum. Call it a slot sweep. Call it a shot of beauty, authority, sheer strength. There was a very, very, very good timing to that shot. इतनी आसान होती नहीं है जितनी आसानी से इस गेंद को खेल दिया 6 के लिए इमरान रियाज ने. देखते ही देखते AJR अपनी सेंचुरी की तरफ गामजन. 91 for no loss in only 7.2 overs. What are your predictions, ladies and gentlemen? कितना टोटल कर पाएंगे AJR? 200, 230, 250. Anything is possible for them at this stage. Ooh, huge appeal, huge appeal. But it's a wide. It's a wide given by the umpire. The wicketkeeper has his hands over his head. He thinks and he says that there was a big edge. But the umpire disagrees. He is in talks with his captain. Will they go upstairs? They have gone upstairs. They've taken a review. They've taken a review for caught behind. Let's have a look at the replay, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, let's have a look at the replay. Was there an edge? Was there an edge? Did he glove it? It appears like there might have been a bit of the glove involved. Once again, have a look at it. It was yet another flighted delivery. He went for another sweep, but it was not really there. Gloves ke bilkul paas se hote hue, and the third umpire says that it's an out. The third umpire might give it an out, ladies and gentlemen, or might not. We'll have to wait a few more minutes for that. Let's see what he thinks. अब यही देखना है कि क्या ग्लव के साथ गेंद टकराई या नहीं. It's a close one. It's a close one. We'll have to rely on the third umpire for that. It's one thing from the front angle and another from the side angle. It's going to be a tough one for the third umpire. I feel for him. Let's keep it slow. Let's keep it steady. A flighted delivery. The third umpire is in a difficult right now. He is in a very tough situation because it's not an easy decision to give. I'm going to be very honest with you guys. What is it going to be? I think the umpire has made his decision. Let's have a look. Let's have a look at the umpire. What does he say? What has the third umpire said to him? What is it going to be? What's the verdict?
Is it an out? Is it a not out? The finger has been raised. It's been given out by the umpire, and look at Imran Riaz. He has been left in a shock. He's in a state of shock. He does not believe it. He cannot believe it. From the front angle, it did appear like there was a little bit of the glove involved. So thought the third umpire. Imran will have to move. He will have to walk back to his dugout. Bank Islami get the first wicket. AJR 91 for 1 after 7.3. A very big wicket for Bank Islami. A very big loss for AJR. Imran Riaz, who was looking quite steady, quite good, had to go back. Could not really get to his 50. But Mohit is still there. Mohit is still there on the pitch. It's Riaz who's come to the middle of the ground. Yet again, another flighted delivery, this time way too outside. And the umpire has been forced to give it a wide. Another wide, back-to-back wides for Rizwan. Yet again, flighted delivery. एक run नहीं आएगा. Another dot. Only one ball remaining in this over. Only one ball remaining in this over. What is it going to be? Last ball, flighted one this time. Ooh, was that a missed catch? Was it another dropped opportunity? But it's a dot to finish the over after 8. AJR 92 for 1. A very big wicket coming from this over. And look at the replay. It could have been another one. It could have been another one. But it was missed. अब्दुल रहमान आए हैं जी 9 ओवर करवाने। AJR 8 ओवर्स में 92 रन्स बना चुका है और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। अब्दुल रहमान इज ए रिस्ट स्पिनर। फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी थी। रियाज मोहित चाह रहे थे बड़ी हिट खेलें लेकिन नाकाम रहे, लेकिन इसी के साथ साथ 1 रन लेकर अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली इन्होंने। He gets to his 50 on just 26 deliveries. What an innings this young guy has played so far. Now the other Riaz is on strike. Yet to get off the mark, another dot to his name. Third delivery in the air, but not really there for him to be caught. It's another boundary and it's the first one for Riaz, who gets off the mark in style.
The fielder should have been on the boundary line over there, then he might have been able to stop that one, but he was not. He was way too far ahead. In the end, it resulted in a boundary. 5 runs of the first 3 deliveries. Once again, played to the same fielder, and once again the same result. He cannot stop it, ladies and gentlemen. Somebody check his hands. What is it? What is happening? What is happening? Because there's another run being snatched from the opposition in the shape of overthrows. They are gifting runs to the opposition right now, Bank Islami, ladies and gentlemen. Not a good display of fielding. Not at all. A very, very flighted delivery in the end, turning into a Yorker. Missed by the batter, missed by the keeper, and once again a freebie. एक और तोहफा AJR के लिए बैंक इस्लामी की तरफ से, और इसी रन के साथ साथ AJR के 100 रन मुकम्मल. 100 is on the board. और अभी तो 9 overs भी नहीं हुए, ladies and gentlemen. Point की जानिब खेला है, 4 runs के लिए another boundary. It's so easy for them. He is making it look way too effortless. इतना आसान भी नहीं होना चाहिए. 9 overs का खेल मुकम्मल, और इसी के साथ साथ 104 AJR with only 1 wicket being fallen so far. दसवें ओवर का आगाज, और पिछले 3 ओवर से फ्लाइटेड पे फ्लाइटेड डिलीवरीज ही देखने को मिल रही हैं. एंड लुक एट दैट स्प्रिंट, लुक एट दैट स्प्रिंट टू स्टॉप द बॉल, एंड इन द एंड ही मैनेजेस टू डू सो. सवाल अभी भी वही है, कितना टोटल बनाना चाह रही है AJR की ये टीम. एट दिस रेट दे आर गोइंग फार एंड बियॉन्ड 200. Another flighted delivery. इस दफा कवर्स के ऊपर से बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन कनेक्शन जरा भी नहीं. एक हाफ हार्टेड अपील भी देखने को नजर आई रिजवान की जानिब से, बट एम्पायर ने पूरी तरह इग्नोर कर दी. थर्ड डिलीवरी स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे. Ooh, yet another misfield. Will this be a boundary? No, it will not. But Bank Islami must be very, very, very angry with their display of fielding so far. Not something they would ever want to look back at. तीन गेंदे 4 रन्स. और रिजवान वही गेंदबाज हैं जिन्होंने पिछले ओवर में अपने विकेट हासिल की थी. इमरान रियाज की ऑलमोस्ट एक और होने वाली थी. 2-0, 2-0. 2020 चल रहा है अभी रिजवान के इस ओवर में. The penultimate delivery, slightly shorter one, targeting the leg side, barely holding on to the ball. The fielder, the keeper, yet again missing it. Will they run another one? No, they will not. आखिरी गेंद पहले हाफ की इस इनिंग्स के. Mohid Riaz has scored 54 so far of 27 deliveries. He is eyeing his century. Will this be stopped? Yes, it will. A single to finish the 10th. After 10, it's 110 for 1 for AJR. Quite a show they've put up so far.
Wish I could say the same about Bank Islami, as they must be not happy with the fielding. Ladies and gentlemen, Danish Muzaffar has come back into the attack. पहले स्पेल में 2 ओवर्स में 11 रन दिए थे. इस बार पहली गेंद, बड़ा स्ट्रोक, और फिर से फील्डर के हाथों में से गेंद बाहर जाते हुए. Yet another sloppy display of fielding by Bank Islami. Easy pickings, I must say, for AJR. They would not mind these at all. Look at that, ladies and gentlemen. The ball bounced right in front of the fielder. He should have stopped it, but he could not. In the end, it's only some excuses. The boundary of the very first ball must be very frustrating for the bowler. I feel for him, I must say. I feel for him. Danish is not happy, and rightfully so. If I was in his place, I would have been much more frustrated as well. So you cannot really blame the guy. Let's see what he does with the remaining 5 deliveries of the over. There's a pause on the ground because we're waiting for the ball to get back. Let's hope the fielder does a better job at finding the ball than he did at stopping it. The bowler is guiding the fielder towards the direction of the ball.
Ladies and gentlemen, after what felt like an entire lifetime, the ball is finally back in the hands of Danish Muzaffar, who comes in to ball his second delivery of his third over. The first one was hit away for a boundary thanks to the misfield. The second one has been played gently with a straight bat for just one run. And now, it's the other Riyaz on strike. And I beg your pardon, ladies and gentlemen, they did not run for a single. So it was a dot. Mohit did not fancy a single over there. Ooh, another dot, back-to-back dot for Danish Muzaffar. A good comeback by him after being hit for a boundary of the very first one. What is it going to be on the fourth delivery? It was outside another boundary. They are making it look way too easy, I must say. Now the question is the Bank Islami going to be able to chase this mammoth of a total that's being set by AJR? They're dealing in boundaries. And let me tell you, they're not going to stop anytime soon unless and until we see Bank Islami stepping up their game. Four, 0, 4. The penultimate delivery of this over, played with the straight bat, given the respect that the delivery did kind of, deserve. But Mohit is not looking happy with this one. He wanted to hit this one over the mid-wicket region, and that's what we saw after he played it with the straight bat. But let's see what he does on the last delivery. He plays it big, he plays it long, he plays it straight, and that's a big one. Good luck finding the ball, because it's gone. Call it the Mohit Airways, because he is sending them flying. What a beautiful stroke. Look at that, ladies and gentlemen. It wasn't the stroke, it was there to be hit, and so he did quite magnificently. What a talent. A very, very big one. The biggest of the night so far. And Mohit moves to 69 of 34 after 11. AJR 124 for 1. Is putting up quite a show after 11. It's 124 for 1, and the projected score, ladies and gentlemen, 226. If they keep on going on this rate and do not lose any more wickets, it's safe to say that they will be eyeing somewhat around 240, 250. And if they manage to get there, it's going to be one hell of a task for Bank Islami to chase it down. रिजवान जो है गेंद को काफी लूप दे रहे हैं, फ्लाइट दे रहे हैं, as Mr. Mohsen, one of our cricket analyst, cricket ex-player would love to say कि लूप दे रहे हैं गेंद को, ज़्यादा तेज नहीं करा रहे. He's letting the ball, spin when it touches the surface. Ooh, Mohit wanted to hit this one big as well, but उतना शानदार connection नहीं रहा. इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक रन ही मिलेगा. 70 हो चुके हैं मोहित के 35 गेंदों पर. 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं मोहित. अनबिलीवेबल. अगर आपको मोहित की बल्लेबाजी पसंद आ रही है तो स्ट्रीम को ठोकें लाइक अभी के अभी. This one looks close, and straight away the finger goes up. It's been given out.
Riaz is not looking happy and he goes for the review straight away as well, and I do not blame him. The impact kind of looked like it was out of the line, but let's see. Let's see what the third umpire has to say about it. On-field call is out. Now the ball is in the court of the third umpire. Ooh. The impact is not in line. The impact does not appear to be in line. What is the umpire going to say? Let's wait for the signal of the umpire for the official verdict. Let's have a look at it once again. From the first look, even before going to the replay, the impact did not really look in line for me. Let's see what the umpire has to say about it. Look at Riaz. He shuffled way outside the off stump. Look at him. Okay, so let's have a look at it, ladies and gentlemen. He steps way outside the off stump, goes for a slog sweep, and the impact does not appear to be in line, but we'll have to wait for the official signal of the umpire. What does the umpire have to say about it? Riaz looks pretty confident that he is not out. Bank Islami look confident that they got another one. What is it going to be? Is it going to be a wicket? Or will Riaz get another life? Let's all move your eyeballs towards the umpire and wait for the signal. What is it going to be? What is it going to be? What does the umpire have to say about it? And look at that, ladies and gentlemen. The decision has been overturned. The verdict has been given by the third umpire, and Riaz gets another life. It's a not out. A sigh of relief for Riaz, a sigh of relief for AJR, and a sigh of discomfort for Bank Islami. रियाज को मिली है दूसरी जिंदगी। जैसे ही रिजवान ने अपील की, अंपायर ने उंगली फिजा में बुलंद की और रियाज सीधा ही went upstairs towards the third umpire for a review, और ये चीज उनके हक में गई। This time it was a full toss, फाइन लेग पे खेल दिया है, 1 रन का इजाफा होगा, मोहित वापस आएंगे स्ट्राइक पर। अब देखना ये होगा कि रियाज को ये जो दूसरी जिंदगी मिली है, क्या उसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं। So far, 6 extras have been given away by Bank Islami in this innings, and the projected score has gone a little below what I was showing earlier to 218. Oh, once again, if there had been a connection between the bat and the ball would have gone flying. But he survives. 1 ball remaining in this over. So far, Rizwan has done a pretty good job of keeping it outside of Mohit's hitting arc, hitting zone. Because we all know if he gets it in there, in the zone, in the slot, we might have a hard time finding the ball. Ooh, yet again he went for a big one. Yet again there was an appeal from the bowler of caught behind. But once again, ladies and gentlemen, the keeper could not get a hold on to it.
after 12, AJR 120 for 1. I beg your pardon, 128 for 1. प्रयास की, लेकिन इस बार फील्डर जो थे गेंद को रोकने में कामयाब रहे। महज एक ही रन का इजाफा होगा स्कोर कार्ड में। नजरें सारी हैं अब तो सीनियर रियाज की तरफ, जो कि 15 गेंदें खेलकर 13 रन बना चुके हैं। He needs to step up his game. He needs to shift the gears. We all know what the other Riaz did. He needs to follow his footsteps, even though he is the senior one. Let's see what he does. He pushes it down for a single. So far, only 2 runs of the first 2 deliveries from Naveed's third over. शॉर्ट बॉल थी, बड़े उम्दा अंदाज में टाइम किया इसको मोहित ने, खेल दिया दायरे के ऊपर से, थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन्स के लिए। सिर्फ जोरदार शॉट ही नहीं लगा सकते मोहित, बल्कि खूबसूरती के साथ टाइम भी कर सकते हैं, प्लेस भी कर सकते हैं। He has all the shots up his sleeve, ladies and gentlemen. He is a player to be witnessed. Somebody get this guy a contract in the PSL. Oh, bring the agents into the MCL, because Mohit Riaz is putting up quite a show over here. This time I was on to the pads. Let's wait for the umpire's signal. What is it going to be? Is it going to be a leg by, or is it going to be runs added to the scorecard on the account of Mohit Riaz? He does not give it a leg by, so it's another run added to Mohit Riaz's account. He moves to 77 of 40. Second last delivery. सीधे बल्ले से डिफेंसिव अंदाज में खेला गया, एक ही रन का इजाफा होगा। So far senior Riaz has not really been dealing in boundaries, or has not really looked that aggressive. I mean, he has played 17 deliveries and only scored 15 runs. Not great for AJR, but it's safe to say कि अभी AJR जितना total set करने जा रही है, हो सकता है, मुमकिन है कि बैंक इस्लामी चेज ना कर पाए,
Because AJR के सिर्फ बैटिंग ही नहीं तगड़ी बल्कि bowling भी तगड़ी है, लेकिन देखना पड़ेगा बैंक इस्लामी क्या कर दिया when it comes to their batting turn. And look at that, Mohit, slow down a little because he hits another one out of the park. He gets another 6 to his name. It was short, it was there to be pulled, and so he does. What a talent this young man is. What a talent. After 13, AJR 142 for 1. Rizwan has come back to bowl his last over. So far, he has given away only 18 runs in his 18 deliveries and also has managed to get a wicket. Pehli geend, and it's a boundary. It was a slow one, it was a flighted one, it was way outside the off stump. The room was given, and Mr. Reyes, he does not miss out on those. A boundary for him, a boundary that was coming for a long time. 4 of the first. What is it going to be on the remaining 5 deliveries? This time it's been swept away. It will only be 1 run added to the scorecard. अभी तक पिछले कुछ 6 से 8 ओवर से ऐसे लग रहा है कि जो भी बॉलर आ रहा है बैंक इस्लामी का ख्वाब ऑफ स्पिनर हो, रिस्ट स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, फ्लाइटेड डिलीवरीज पर ही सारा का सारा फोकस रहा है. कोई मीडियम पेसर देखने को नहीं मिला, कोई फास्ट पेसर देखने को नहीं मिला. बिग शॉट, नॉट इनफ गुड टाइमिंग, जस्ट लैंडिंग सेफली. A feet, I beg your pardon, a feet? A foot. What I meant to say is 2 to 3 feet away from the fielder. And Mohit survives. It could have been curtains for him, but he gets to live another ball. But right now it's the senior Reyes on strike. Another flighted delivery. Not that great of a timing. Just 1 run will be added. So far 7 of the first 4. 2 to go. Rizwan has been very decent, I must say. While the other bowlers have had quite a lot of runs to give to the opposition, he has only given away 25 of his 3.4 overs. और मेरी यही कहने की देर थी, ये कहने की देर ही थी कि मोहित ने उठाकर गेंद को बाहर फेंक दिया. He played it straight like an arrow. He sent it flying like an arrow. He hit it big, he hit it long. Another 6 to his name. How much power does this guy have? Mohit moves to 90. 43 गेंदों पर महज 90 रन बना चुके हैं. इस बार कुछ ज्यादा ही लेग स्टंप के बाहर चले गए थे रूम बनाने के लिए. ऑफ साइड पर खेलना चाह रहे थे, लेकिन it was way outside his reach. After 14, it's 155 for 1.
मोहम्मद नवीद आए हैं अपने कोटे का आखिरी ओवर करवाने। देखते ही देखते बाप बेटे की पार्टनरशिप 64 रन की हो चुकी है। पहली गेंद यॉर्कर, राइट ऑन द मनी। दिस इज व्हाट वी लव टू सी, दिस इज व्हाट बैंक इस्लामी नीड्स मोर ऑफ। प्रोजेक्टेड स्कोर 221 का जा रहा है। करंट रन रेट 11.01। Mohit Riaz is back on strike now, who has made 90 of 44 deliveries, only 10 runs away from scoring yet another century in the MCL. जितनी तारीफ करें मोहित की उतनी कम है। सभी एक्टिव हो जाएं, क्योंकि देखते ही देखते अभी के अभी मोहित अपने 100 की जानिब पहुंच जाएंगे। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ, ना ही टाइमिंग मिली। बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी और जैसे ही कनेक्शन हुआ मोहित काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए अपने आप से। ये निशानी होती है एक अच्छे प्लेयर की, जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी वो मिस करते हैं तो ज़रा भी खुश नहीं होते अपने आप से। वंस अगेन बाप बेटे की पार्टनरशिप 66 की हो गई। इससे पहले चाचे भतीजे की थी। And now the father has walked to the crease to join his son. अभी तक इस पार्टनरशिप में ज़्यादा जो रन्स हैं वो हैं मोहित के, जो कि 91 रन्स बना चुके हैं अभी तक 45 गेंदों पर। While this father has scored 23 of 22 deliveries. सवाल ये है, क्या मोहित रियाज अपना 100 बना पाएंगे? Can he get to his 100? What does the public think? Plays it towards the offside, and is that Cristiano Ronaldo on the pitch? We get to see some footwork. Oh, will there be a run out? No, there will not be one. Mohit gets another double added to his scorecard. ये जो दरम्यान में हमें फुटवर्क देखने को मिला, थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा जैसे फीफा के मैं ट्रायल्स पे आ गया हूँ। Was it Ronaldo? Was it Messi? Or was it Neymar dos Santos Silva Jr.? वैसे कहने को तो मारियो बालोटेली भी मुझे बड़ा पसंद है। What an entertaining character he is. He gets cheeky, scoops it, and scoops it quite magnificently. क्या नहीं है इस बंदे के पास? What shot does he not have up in his arsenal? What can he not do? Somebody call this guy Superman, because he's not less than one. Look at that once again. सीधा खेल सकता है, लेग साइड पर खेल सकता है, ऑफ साइड पर खेल सकता है, चीकी होकर स्कूप कर सकता है, थर्ड मैन के ऊपर से प्लेस कर सकता है। ये बंदा क्या नहीं कर सकता? $100 by a big one, but सिर्फ एक ही रन का इजाफा होगा और इस एक रन के साथ मोहित will keep the strike. He is sitting on 98 of 48 after 15. AJR is 165 for 1. Ladies and gentlemen, 15 overs have been played so far in this first innings of this match between AJR and Bank Islami. And so far,
it has been a sheer display of domination from AJR. 165 for 1 after 15, partnership of 75 from 45. What a performance. What a performance by this young lad, specifically Mohit Riaz. Can he get to his 100 on the shot? Can he? He is running back for another one. Will this be a wicket? No, it won't. Imagine if he had gotten run out on this very delivery. He must have been frustrated. It must have been so sad for him. But for now, he survives. He sits on 99 and watches his father play this one. Waqas, who's bowled only 1 over so far and gave away 21 runs, has come back to bowl his second. A dot it will be, ladies and gentlemen. मोहित पर नजरें रखें. मोहित से इंतजार नहीं हो रहा. He cannot wait to get to his 100. He cannot wait to celebrate. What an innings it has been from this young talent. What a prospect. What a guy. And what a player. Ooh, could not really get the bat to the ball. It was close though. It was very close. It was a centimeter or two away from getting a soft edge. अगर यहाँ पे outside edge लगता और कीपर पकड़ लेता तो it would have been curtains for the senior Riaz out there. 24 गेंदें खेल चुके हैं, 23 रन्स बनाए हैं. अग्रेसर इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मोहित रियाज हैं. ये कहने की देर थी कि बल्ले के मिडल पर गेंद लगी है, फंबल हुआ है फील्डर से, लेकिन बचत हो जाएगी. बाउंड्री कुशन को टच नहीं होगी. और इसी के साथ जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था, मोहित रियाज is back on strike, ladies and gentlemen. He is back on strike. Will he be able to get to his 100 on this very delivery? He looks calm, he looks steady, he looks determined. क्या इस गेंद पर 100 होगा, और अगर होता है तो किस अंदाज में होगा? बड़ी शॉट, लेकिन उतना बढ़िया कनेक्शन नहीं. 1 bounce to the fielder, 1 run, and Mohit Riaz completes his century. Clap for this young guy as much as you can, because he has been subliminal for his team throughout this MCL, even in the previous tournament as well. What a talent he has been so far. Consistent, amazing, elegant, magnificent. Get all the adjectives you can, because this guy deserves it all. 150 deliveries. Round of applause for Mohit Riaz. On the other hand, it's the father who flicks it away, and the ball nearly bounced over the head of the fielder. But he jumps like a superhero and stops it. 16 overs have been completed so far, and it's 169 for 1 for AJR.
First ball, cut away towards the point region. सिर्फ और सिर्फ एक रन का इजाफा होगा. And the danger man, the young Riyaz, the man who has been heading the ball long, big and huge, is back on strike. Mr. Mohit Riyaz, of course. What will he do? He swings it blindly with all his might. He is looking tired. And we cannot really blame him because the guy has been on the crease for quite some time now. He has played 16 overs. He has scored 100 runs at the strike rate of 200. So let the guy be a little tired. Oh, he does not really only have the power, but he also has the technique. He also has the soft hands. He can place it well. Well enough to get 3 runs added to the scorecard. Zishan, the captain, is bowling his third over. 2.2 overs में अभी तक 36 runs दे चुके हैं कप्तान. Badi hit, bada chi. It's been coming for a long time for Mr. Riyaz, and he finally gets his very first 6 of this innings. And look at that. He has hit the captain out of the park for a maximum. Straight to his own dugout, I must say. अपनी team पर ही छक्के बरसा रहे हैं ये. Nobody safe from the Riyaz duo. Nobody. One, wide, 3, 6. What is it going to be for Zishan? It's going to be another boundary, ladies and gentlemen. Back-to-back boundaries. First a 6, then a 4. They're dealing in boundaries, and they're not going to stop at all because there's not many balls remaining in this innings. Only 3.3 overs left. And they are going to hit as many boundaries as they can in these remaining few overs. बैंक इस्लामी के जहनों में अभी सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होगा कि जितने रन्स हम कंसीड कर रहे हैं उतने हम कर पाएंगे या नहीं. है गुड बॉल, a yorker missed by the batter, a dot, something that they need more. They need a lot more of those, and a few wickets. Last delivery, अच्छा connection, अच्छा result. एक और boundary. 3 boundaries आई हैं ज़ीशान के इस ओवर से, and once again he proves to be expensive for his team. Room was given. He came down the pitch. He hit it strong. He hit it over the point region for a boundary. And after 17, AJR 188 for 1. आखिरी 18 गेंदें इस पहली इनिंग्स की. वक्कास टू मोहित, सीधा खेला है लॉन्ग ऑफ की जानिब. सिर्फ और सिर्फ 1 रन का ही इजाफा होगा. Everybody is looking
tired on the ground right now, I must say, especially these two, Mohit Riaz and his father. देखते ही देखते इनकी पार्टनरशिप भी 100 की जानिब रवा दवा है। 98 रन्स की हो चुकी है इन दोनों की पार्टनरशिप, बाप बेटे की पार्टनरशिप। चाह रहे थे गेंद को उठाकर मारना मिड स्क्वायर और फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन the ball kept a little low. It kept a little low. There was not enough bounce on that very delivery, which is why he could not really get the ball to the bat. In the end, it resulted in a dot. So far, good stuff from Waqas. अच्छा कनेक्शन, क्या रोक पाएंगे गेंद फील्डर? बिल्कुल रोक पाएंगे। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा, something that we have not really seen a lot of from Bank Islami in this very match, something that they must be eyeing on to improve in the following matches to come. पहला हाफ इस ओवर का काफी अच्छा, अब दूसरा हाफ जो है वो कैसा रहता है? स्विंग एंड अ मिस फॉर रियाज, अ डॉट। सो फार सो गुड, 4 गेंदें 3 रन्स वकास की। कॉल हिम द डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। Somebody get this guy in contact with Haris Rauf, maybe he can teach him a thing or two. The penultimate delivery. Once again it has been played towards the offside, but this time once again the fielder will cut it off. It will be only 1 run being added to the scorecard. So far so good, rather amazing I must say. 5 गेंदों पर महज 4 रन ही दिए हैं। डेथ ओवर्स में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मोहित की कोशिश होगी इधर गो बिग और गो होम, बिकॉज पीछे सिर्फ और सिर्फ 13 रन रह गए हैं। सिंगल से और डॉट बॉल से अपना ही नुकसान करेंगे ये। और जोरदार हिट लगाने की कोशिश, उतना बढ़िया कनेक्शन नहीं हुआ। गेंद रेंगते रेंगते फील्डर की जानिब 1 ही रन का इजाफा होगा। अ सिंगल टू फिनिश द 18th आफ्टर 18। इट्स 193 for 1. A very good over from Waqas. कप्तान ज़ीशान आए हैं अपना आखिरी ओवर और इस इनिंग्स का पेनल्टीमेट ओवर करवाने। अभी तक 18 गेंदों पर अपना 50 मुकम्मल कर चुके हैं और ऐसा 50 देखकर किसी को भी खुशी नहीं होती। पहली गेंद हाउएवर अच्छी थी, डॉट बॉल। आखिरी 5 में भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट चाह रहे होंगे। मोहित रियाज इज लुकिंग वेरी टायर्ड। ही हैज बीन not so successful and hitting the ball long and big and huge. आखिरी कुछ टाइम से काफ़ी टायर्ड नज़र आ रहे हैं और हम उनको नहीं ब्लेम कर सकते because he has been there for quite a long time. Now it's the other Riaz on strike. 35 गेंदें खेलकर 43 रन बनाए हैं. He comes down the pitch. The ball is in the air, but landing in no man's land. A couple of bounces, 1 bounce, 2 bounce, 3 bounce, and the ball gets to the fielder's hand, and there will be an addition of a single run added to the scorecard. 3 गेंदें रह गई हैं पीछे, 3 गेंदें, और इस इनिंग्स में 9। इन 9 गेंदों पर कम से कम 20 तो बनाने चाहिए। बड़ी स्ट्रोक, बड़ा 6,
बल्ले के दरमियान में जाकर लगी गेंद और सीधा मिड विकेट के ऊपर से, डग आउट के ऊपर से 6 रन्स का इजाफा कर दीजिए मिस्टर स्कोरर AJR के खाते में। लुक एट दैट। मेरे कहने की ही देर थी कि मोहिब को कुछ करना होगा और मोहिब ने कुछ कर दिखाया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। Triple 1 for Mohib. Mohib, I beg your pardon. Triple 1 of 56. There is an edge. There is an edge, and the ball is in the air. Has it been caught? Yes, it has. The danger man departs. Bank Islami finally get the wicket of Mohib Riaz. He scored triple 1. 111 runs of 57 deliveries, a knock to be remembered, a knock to be flourished, a knock that will be not easily forgotten for the years to come in the MCL. Everybody is clapping and applauding Mohid Riaz for the innings he has played. AJR 2 of 1 for 2, and there's still one ball remaining in the 19th. It's Khalil who has walked to the center. He does not have any helmet on. He's come in with the bounce set of Mr. Brian Lara, of Sir Vivian Richards. He wants to hit the ball long out of the park and the remaining 7 deliveries that he has. Left-hander. Facing Zishan. It was a Yorker length of a delivery. Just 1 run. Khalil gets off the mark. He wants the strike. He does not run for the second. Zishan का काफी तगड़ा ओवर, पहले 3 ओवर्स में 50 के इन्होंने अपना, और आखिरी 6 गेंदों में महज सिर्फ और सिर्फ 8 रन, एक विकेट के साथ of the danger man Mohid Riaz. AJR 202 for 2 after 19. वकास इस इनिंग्स का आखिरी ओवर करवाने आए हैं। खलील की कोशिश थी कि इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उठाकर आउट ऑफ द पार्क फेंका जाए, लेकिन जोर लगाया था, टेक्निक नहीं थी, टाइमिंग भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा। 5 balls remaining. 5 balls remaining. What is it going to be? Can AJR manage to get around 15 runs off the very last 5 deliveries? Or will it be Waqas who reigns superior over Riaz and Khalil? Second of the last. Big one, and it's another 6. It's another 6. Riaz gets to his 50 in style, and what a way to get to 1. What a way to get to his half century. He gets there with the mammoth of a 6. Very good innings it has been from him. He started a bit slow, then switched gears when their need arose. 4 balls remaining. AJR standing on 209 for 2. They must be eyeing somewhere over 225 to 230. If they can get there, it might be curtains for Bank Islami, if I'm being honest with you guys. Third delivery, played straight. Will this be another boundary, or will the fielder cut it off? He will. They run back for the second one. 9 runs of the first 3 deliveries, 3 to go, 211 on the scorecard. Can they get to 220, ladies and gentlemen? Can they get to 220?
It's Riaz on strike, who has managed to score 52 of 38. The partnership 10 of 4. Can they get to 220? Waqas. Waqas, can he get another wicket? Or rather, the first one to his name. He succumbs under pressure, bowls it a little too wide. The umpire has been forced to free his arms and signal towards the scorer for another wide. Waqas will have to reload that one. Fourth delivery, last over, big stroke. Will this be a boundary? Oh yes, it will, absolutely. Absolutely it will. When Riaz hits it, nobody can stop it. Nobody, ladies and gentlemen. Oh, what happened to me over there? Please, I'm so sorry. He gets another boundary to his name. यहाँ पर मेरी जुबान थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई, वहां पर वकास की लाइन और लेंथ लड़खड़ाती हुई, लेकिन रियाज नहीं चूकते. The penultimate delivery of this first innings. It's a big swing of the bat and good footwork by the man placed inside the circle in the final leg region. रोक लिया, वरना एक और बाउंड्री होनी थी. अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का. आखिरी गेंद है इस इनिंग्स की. 217 ऑन द बोर्ड फॉर AJR. कैन दे गेट टू 220? क्या 220 हो पाएगा? अभी तक वकास के आखिरी ओवर में आ चुके हैं 15 रन 5 गेंदों पर. 45 कर लिए हैं इन्होंने. अगर खलील आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हैं तो वकास का 50 भी मुकम्मल हो पाएगा. आखिरी गेंद, बिग स्विंग ऑफ द बैट, नो कंट्रोल, नो टेक्निक, barely any connection, just a single of the last delivery. और इसी के साथ पहली इनिंग्स का खेल होता है खत्म. AJR ने बनाए हैं 120 गेंदों पर 218 रन. They have set a gigantic target of 219 runs for Bank Islami to chase down. And look at that post-innings summary. Mohit Riaz 111 57 गेंदों पर. The senior Riaz 57 of 40 and another Riaz. Ladies and gentlemen, nepotism चल रहा है यहाँ पर, and I hope not. But 38 of 20 और खलील जो के लेट आए थे 3 of 3. Overall 218, 2 विकेटों के नुकसान पर. Rizwan 1 for 31, Zishan 1 for 58, Muzaffar 0 for 25 and Abdul Rahman 0 for 11. AJR looking like favorites. Let's see. Bank Islami chase kar pati hai nahi. And I'm hearing from my sources that there is no nepotism. Well, I'm glad. But we love to see so much Riaz. And all the Riaz performing. We will be back after a short break with the second innings. He is the father, he is the son, and the chachu. ठीक है, और अभी 2 और हैं.
Ladies and gentlemen, welcome back to second innings of match number 7 of Soneri Bank presents MCL T20 Lace Cup 2026. It's AJR versus Bank Islami. AJR won the toss and elected to bat first and set a mammoth of a target for Bank Islami to chase of 219 runs. Second ball of the second innings, it was on the pads. Could not really get the bat to the ball. There was a half-hearted appeal by the bowler, but clearly way outside the leg stump. पहला रन आ चुका है स्कोर कार्ड पर बैंक इस्लामी की तरफ से in the form of a leg back. Beg is the bowler, bowling to Naveed. बड़े शॉट की जानिब इंटेंट था इनका, लेकिन उतना बढ़िया कनेक्शन हो नहीं पाया. चाह रहे थे कि एरियल शॉट खेलें. इन द एंड सिर्फ एक ही रन मिलेगा. फर्स्ट रन कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ दीज प्लेयर्स. 2 ओवरऑल. पहली 3 गेंदों पर बेग की सिर्फ और सिर्फ 2 रन ही आए हैं. अगर पावर प्ले में कुछ विकेट्स हासिल हो जाए AJR को तो ओ माय गॉड, he has bowled him. Ladies and gentlemen, Hussain is gone. What a ball. Look at the replay. बैट और पैड के दरमियान में से गेंद सीधा बेल्स को उड़ाती हुई हुसैन वापस डगआउट की जानिब सर को झुकाए चलते हुए. A sad sight for Bank Islami, a sad sight for the team, something that they should not really be seeing, especially when it comes to chasing a mammoth of a target of 219 runs. But there's still a long way to go. अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ. अभी भी पूरे 19.2 ओवर्स पड़े हैं. अभी भी 9 विकेटें हैं बैंक इस्लामी के हाथ में. An early breakthrough for AJR. An early wicket has fallen for Bank Islami. हुसैन 0 बनाकर डगआउट में वापस जा चुके हैं. बेग को हासिल हुई एक बहुत बड़ी कामयाबी. 2 पर पहली विकेट गिर चुकी है बैंक इस्लामी की. What a start for Bank. I beg your pardon AJR. What a start. पहले बैटिंग करो, बैटिंग करके 218 रन्स बनाओ, तो 19 का टारगेट दो, और फिर जब गेंदबाजी आए तो पहले ही ओवर में एक विकेट लगा दो. First ball to the new batter Rizwan, who plays it with a straight bat. Defensively, so far पहली 5 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन दिया है बेग ने. एक लेग बाय भी था, लेकिन एक विकेट भी हासिल की है. The last delivery of the first, a slow swinging ball. डायरेक्ट हिट के लिए गए थे, लेकिन बैटर क्रीज डॉट द फर्स्ट आफ्टर 1. It's 2 for 1 Bank Islami. के मौसीकार भी हमारे साथ इस टीम में मौजूद हैं.
आई विश आपको उनकी मौसीकी सुना सकते, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी हमें, बिकॉज ही इज दैट गुड। सज्जाद आए हैं जी इस इनिंग्स का दूसरा ओवर करवाने। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग रन अप, आई मस्ट से। ये अपील जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गेंद जो थी लेग स्टंप के बहुत बाहर थी। ओवर थ्रोज और 1 रन का तोहफा मिलेगा बैंक इस्लामी को। आप 219 का पहाड़ जैसा टारगेट चेज कर रहे हों और पहले ही ओवर में आपकी एक विकेट भी गिर जाए, क्या गुजरता होगा आपके ज़हन गुमान में उस वक्त? एक और तोहफा बैंक इस्लामी को AJR की तरफ से। अंपायर के इशारे का इंतजार। वाइड, और उसके साथ साथ 1 रन चुरा भी लिया। बड़ी हिट लगाने गए थे, नाकाम रहे। कैमरामैन को भी कंफ्यूज कर दिया कि गेंद जा किधर रही है। सच ए डिसीविंग बैट्समैन आई मस्ट से। सज्जाद so far so good, excluding that wide delivery जिसमें 2 रन्स का तोहफा मिल गया बैंक इस्लामी को। Sajjad to Rizwan, no connection, a dot. पहली 9 गेंदें हो चुकी हैं और 9 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 6 रन आए हैं। Back to back dots for AJR. अभी तक AJR जो है कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है इस कॉन्टेस्ट में बैंक इस्लामी को। सीधे बल्ले से खेला है नवीद ने, क्विक सिंगल लेने में कामयाब रहेंगे। स्लॉपी इन द फील्ड मिस्टर रियाज। रिजवान बैक ऑन स्ट्राइक, 3 गेंदें खेलकर 1 रन बना चुके हैं। अब सज्जाद की इस आखिरी गेंद को फेस कर रहे हैं। क्या डिफेंड करेंगे, स्ट्राइक रोटेट करेंगे या एक बड़ी हिट के लिए जाएंगे? आपका क्या ख्याल है? No idea, says the young man next to me. He goes for a big one. Will it be a 6? No, I don't think so. But it will be a boundary. 4 runs added to the scorecard. The very first boundary of this innings coming from the bat of Rizwan. And after 2, it's 12 for 1 for Bank Islami. शॉर्टर गेम थी, पेस जरा भी नहीं थी। पूरा का पूरा घंटा था रिजवान के पास इस शॉट को खेलने का, गेंद को उठाकर बाहर मारने का, और ऐसा ही उन्होंने किया और बड़ी बासानी। बेग आए हैं वापस। पिछला ओवर इनका बड़ा ही शानदार था। क्विक सिंगल लेने में कामयाब रहे नवीद और रिजवान। और सिर्फ 1 रन दिया था और विकेट भी हासिल की थी। अभी पहली गेंद पर 1 रन आ गया है। अब बाकी की 5 गेंदों पर इनकी कोशिश होगी कि एक और विकेट हासिल कर पाए, एक और विकेट अपने नाम कर पाए। बोल कर मेरी वक्कियों में दर्द शुरू हो गया है, लेकिन it is what it is, ladies and gentlemen. We're not gonna stop. We're gonna continue bringing the content for you because this is the MCL, a prestigious tournament.
of the corporate cricket in Pakistan. Quick two, quick two, quick two. A very strong appeal from Beg. He thinks he has run him out. What does the umpire think? The umpire has thrown it away to the third umpire. Let's have a look at the replay, shall we? Let's see if he is back in the crease or not. Let's see if the batter is back in the crease or not. Is it an out? Is it an out? Is it a not out? I think he's safe. I think he's safe. From the first look in the replay, the batter appears to be quite inside the crease. But let's wait for the signal of the third umpire. It should be a not out. Or what? Will it be a not out? अब ये तो इंतजार करना पड़ेगा थर्ड अंपायर की कॉल का. Look at that. The batter is in the frame. He is coming back into the crease. He is coming back. The bat is now grounded and he is not out. From the replay, that's what we can conclude. Let's see what the umpire has to say. What is it going to be, Mr. Umpire? Well, it's a not out. Rizwan survives to play another ball. Naveed 7 गेंदें खेलकर 9 रन बना चुके हैं. बड़ी शॉट के लिए फिर से जा रहे थे, बड़ा स्विंग कर रहे थे, हाई बैक लेफ्ट, लेकिन कनेक्शन उतना तगड़ा नहीं आई मत से. मिडिल नहीं कर पा रहे गेंद को. एक ही रन का इजाफा हुआ. तीन गेंदों में 4 रन. चौथी गेंद फ्लिक कर दिया है जी लेग साइड की जानिब. कोशिश रहेगी इनकी कि 2 रन हासिल कर पाए. दूसरे के लिए भागे हैं, लेकिन ये क्या 4 हो गया. इधर हम 2 का सोच रहे थे और इधर बाउंड्री अपने नाम कर ली. He made it look very effortless and easy, I must say. Rizwan gets the very first boundary to his name. Quick single. मंजिल बहुत दूर है अभी भी बैंक इस्लामी के लिए. अभी भी बैंक इस्लामी को चाहिए 199 रन्स. और 8. आखिरी गेंद बेग के दूसरे ओवर की. एक ही रन का इजाफा होगा. 10 रन आते हुए बेग के इस ओवर के, और इसी के साथ तीसरे ओवर का खेल मुकम्मल. बैंक इस्लामी 22 फॉर द लॉस ऑफ 1. Jad is back into the attack. First ball काफी ज्यादा रूम दे दिया. नवीद अपने बाजू खोलने में कामयाब रहे बड़ी आसानी से.
और बैकवर्ड पॉइंट की जानिब खेल दिया 4 रन्स के लिए। इतना रूम नहीं दे सकते आप सज्जाद, इतना रूम नहीं दे सकते। लुक एट दैट, he runs like a gazelle but drops it quite wide of the off stump, resulting in Naveed freely opening his arms and getting an easy boundary to his name. दूसरी गेंद, बहुत कम पेस, लॉन्ग ऑन की जानिब खेला है। 4 रन्स मिलेंगे जी। बैक टू बैक बाउंड्रीज, बैक टू बैक बाउंड्रीज कमिंग फ्रॉम नवीद्स बैट। पहली 2 गेंदें सज्जाद के दूसरे ओवर की बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकी हैं नवीद ने। बैक टू बैक फोर्स। अगर इस गेम को जीतना चाहते हैं तो इसी तरह खेलना पड़ेगा बैंक इस्लामी के बल्लेबाजों को। बड़ी स्ट्रोक और एक बड़ा 6, 2 4s and a 6 to follow. Look at that. It was full, it was slow, it was there to be hit, and so he did. Easy pickings for Naveed. 12 गेंदें खेल चुके हैं, 25 रन्स बनाए हैं, 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अगर बैंक इस्लामी जीतना चाहती है ये मुकाबला तो कुछ ऐसी ही बाउंड्रीज इनको चाहिए होंगी हर आने वाले ओवर में, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस दफा भी सज्जाद की थोड़ी सिमिलर गेंद ही थी, लेकिन इस बार नवीद बड़ी स्ट्रोक के लिए नहीं गए बल्कि सीधे बल्ले से पंच कर दिया डाउन द ग्राउंड, 1 रन का इजाफा। क्या रिजवान भी अग्रेस करेंगे? नहीं, सीधे बल्ले से खेलेंगे, सीधा खेलेंगे, डिफेंसिवली खेलेंगे और गेंद जाएगी वापस सज्जाद के हाथों में। डॉट बॉल रहेगी ये। एक आखिरी गेंद बची है इस ओवर में। सज्जाद का ये ओवर काफी महंगा साबित होते हुए 4 4 6 1 15 रन आ चुके हैं 5 गेंदों पर। और आखिरी गेंद पर कवर्स की जाने खेल दिया, लेकिन लकीली फॉर सज्जाद गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में। गुड स्टॉप इन द फील्ड। अनदर डॉट टू फिनिश द सेकंड ऑफ सज्जाद एंड फोर्थ ऑफ दिस इनिंग्स। बैंक इस्लामी 37 for 1 after 4. Abdul Ahad has been brought into the attack by the captain of AJR. पहली गेंद डॉट रही इनकी, 5 ओवर करवाने आए हैं इस इनिंग्स का। पार्टनरशिप देखते ही देखते बढ़ रही है, 35 की हो चुकी है महज 21 गेंदों पर। AJR की कोशिश होगी कि पार्टनरशिप को तोड़ा जाए, लेकिन अभी तो नवीद का बल्ला तोड़ रहा है गेंदबाजों की कमर। एक और बहुत बड़ा 6, once again down the ground, straight like an arrow, big and long. That's how he plays it.
पहली गेंद डॉट थी, दूसरी गेंद पे 6 और तीसरी पे चौका जनाब. Somebody stop this guy. What a show he's putting on. Back-to-back boundaries yet again for this young man on your screen. First a 6, then a 4. Similar ball, similar result, similar region. Come on, Abdullah, you need to change your line, you need to change your length. अगर एक ही जगह पे एक ही तरह की गेंदबाजी करते रहेंगे अब्दुल्ला, तो एक ही तरह का रिजल्ट भी फिर इनको देखने को मिलेगा. 45 की पार्टनरशिप हो चुकी है लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्वातीनों हजरात. चौथी गेंद, स्लॉग स्वीप. दिस टाइम इट्स अनदर बाउंड्री. 6-4-4. नवीद नहीं आ रहे बाज मेरे यार, ये नहीं रुकने वाले. इनको चाहिए मजीद ऐसे 4. अब्दुल्ला अहद को अटैक में लाने का फैसला AJR के लिए कोई इतना कामयाब साबित नहीं हुआ, बल्कि कुछ यूं लग रहा है कि पूरा का पूरा मोमेंटम बैंक इस्लामी की जानिब शिफ्ट हो रहा है. पांचवी गेंद. क्या इस गेंद पर कम बैक कर पाएंगे अब्दुल्ला अहद? वो फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार मोर ऑफ एन इनसाइड एज लगाया जी, अंदरूनी हिस्से पर लगी बल्ले के. उस तरह का कनेक्शन नहीं हासिल हुआ जिसकी बदौलत अब्दुल्ला अहद बच गए. सिर्फ और सिर्फ एक ही रन मिला. अब बची है आखिरी गेंद अब्दुल्ला अहद के इस ओवर की. He needs to finish it good. रिजवान स्लाइस करना चाह रहे थे, लेट कट करना चाह रहे थे बैकवर्ड्स पॉइंट की तरफ, लेकिन कनेक्शन बनाने में नाकाम रहे. डॉट टू फिनिश हिज वेरी फर्स्ट. ही गिव्स अवे 15 रन्स इन दिस ओवर. 5 ओवर्स के बाद बैंक इस्लामी 52, 1 विकेट के नुकसान पर. Continuing his spell, coming to bowl his third. और पहले ही गेंद पर खुशामदीद कहा है नवीद ने अपने बल्ले से 4 रन हासिल करके. What did I say, ladies and gentlemen? Naveed is not going to stop. 220 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नवीद इस वक्त. कोई भी गेंदबाज महफूज नहीं है नवीद की अग्रेशन से. Second delivery of the last over of the power play, and this might be a no ball. Catch has been taken by the fielder. Let's wait for the umpire's decision. It appeared like it was a no ball. क्या कहना है अंपायर का? What's the decision? Has the umpire given it an out? Let's have a look at it. Was it a no ball?
It's a very close one yet again. It's a very, very tight one. To the naked eye, in the very first look, it did appear to be one. Let's see what the umpire has to say. Here is the side view angle. It's a fair delivery when it comes to the foot. But let's see if it's above the waist height. The batter moves out of the crease. It's going to be a tough one. Let's wait for the umpire's call. What does the third umpire think? And it's a no ball, ladies and gentlemen. He survives. Naveed survives. Something that the AJR players should not be happy to see. But it must be a sigh of relief for Bank Islami, because this guy right here on your screen, Naveed, is the beacon of hope for the whole of the team of Bank Islami. इस गेंद पर नवीद ऑलमोस्ट वापस डगआउट की जानिब चलते बनने वाले थे, लेकिन साथ ही अंपायर के फैसले ने बचा लिया. It turns out to be a no ball as Baig bowled it above the waistline. It was kind of a slower one. It was dipping. It was coming back down. Lekin the third umpire made a tough call. And let's be real, even to my naked eye in the very first look, it did appear to be one. नवीद को मिली है दूसरी जिंदगी, शफल किया है. वाइड देनी तो नहीं चाहिए अंपायर को, but let's see what he thinks of it. लेग बाइज, टांग पर लगकर गई थी जनाब. एक रन का इजाफा होगा, लेकिन वो एक रन नवीद के खाते में नहीं जाएगा. So far, power play में अच्छा जा रही है बैंक इस्लामी की टीम. They're quite on track to chase down the target of 219 runs that's been set by AJR. Big फिर से pass पर, big call, but the umpire is not interested at all as he walks away, completely ignoring the appeals of the bowler, of the wicket keeper. अब देखना ये है कि क्या AJR के कप्तान सीधा थर्ड अंपायर के पास जाएंगे या नहीं. नहीं जाएंगे जनाब. And a wise decision made because it did appear to be missing the leg stump, sliding down the leg side. अच्छा फैसला in the end, गेंदबाज का, कप्तान का, विकेट कीपर का. शाहीन शाह अफरीदी की याद दिला दी. अगर इनकी जगह वो होते तो पहले ही सेकंड में थर्ड अंपायर की जानिब चले जाते. एक्साइटेड बड़े हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स. बड़ा स्ट्रोक नवीद का. क्या ये 6 होगा? क्या ये 6 होगा? नहीं. He's been caught in the deep. He has to go back to the dugout after scoring 45 of 22 runs. बेग ने डिनाई कर दी नवीद को उनकी हाफ सेंचुरी. A very big wicket for AJR and a very big loss for Bank Islami. Good catch in the deep. A very good catch in the deep. Naveed goes back after scoring a blistering innings of 45 runs. Just 22 deliveries. Zishan, the captain, is the new man on crease. पावर प्ले में रन्स तो डिसेंट हैं बैंक इस्लामी के, लेकिन विकेट्स कॉलम पे अगर नजर डाली जाए तो 2 विकेटें गिर चुकी हैं. That's something they need to be looking at right now. क्योंकि ना वो अभी विकेटें संभाल सकते हैं. आराम से खेलना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते.
विकेटें जाना साथ साथ उनका एक और अलग बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी भी पावर प्ले की 2 गेंदें बची हैं। ज़ीशान नए बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पर। क्या वो इन 2 गेंदों को मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए खेलना चाहेंगे या फिर डिफेंड करेंगे, सेट होने का टाइम लेंगे? आई थिंक इज गोना गो फॉर द ऑप्शन नंबर 2. व्हाट डू यू थिंक लेडीज एंड जेंटलमैन? जेंटली खेल दिया, रन आउट का मौका था, रन आउट का मौका था, लेकिन मिस कर दिया जी फील्डर ने. He would have been gone. It would have been curtains for the captain on the very first delivery. He would have been gone on a duck. लेकिन he survives. आखिरी गेंद फेस करेंगे इस पावर प्ले की अब रिजवान, जो कि 10 गेंदें खेल चुके हैं, relatively सेट हो चुके हैं, 8 रन्स बनाए हैं. रन्स का कॉलम में जरा थोड़े पीछे जा रहे हैं, लेकिन इस आखिरी गेंद पर उनको कोई ना कोई बाउंड्री जड़नी पड़ेगी. क्या करते हैं रिजवान? Big to Rizwan. And there's a big appeal of caught behind, but the umpire is not interested at all. A dot to finish the power play after 6 Bank Islami, 60 for 2. And Big gets another wicket in the last over of the power play. फिरोज आए हैं जिन्हें गेंदबाज, और पहली गेंद पर कप्तान ने, ज़ीशान ने चौके के लिए जड़ दिया है जी इनको. That's one way to welcome a new bowler. ज़ीशान फिरोज, गेंदबाजी पर ज़ीशान फेस कर रहे हैं. ज़ीशान to ज़ीशान, and the batter ज़ीशान wins this battle. Back-to-back boundaries for him. 2 loose deliveries. ज़ीशान फिजा में हाथ बुलंद करते हुए, माजरत करते हुए कि भैया मुझे माफ कर दीजिए. I know these deliveries were bad. I apologize. I will be better. So let's see if he will actually be better. Two boundaries of the first 2 deliveries. Third one played with the straight back to the bowler. Better. He was better, ladies and gentlemen, on the very third delivery. Can he keep it tight like the one we saw last? Big stroke, straight bat, it's in the air.
and it's been caught. Celebrate, my brothers, celebrate. There's that boom boom Afridi on the boundary line. A wicket for Zishan Feroz. He gets the danger man, the captain Zishan. पहली दो गेंदों पर आई दो बाउंड्रीज, उसके बाद डॉट, फिर चौथी पर बहुत बड़ी विकेट. That's one way to make a comeback. लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला था जी. गेंद काफी देर हवा में थी, फिजा में थी, बुलंदो बाला थी, अंडर लाइट्स. इस तरह का कैच पकड़ना लेडीज एंड जेंटलमैन इतना आसान नहीं होता. सो kudos to him for actually not dropping it. Zishan goes back to the pavilion after scoring 9 of 4 deliveries. Bank Islami 68 for 3. Zishan Feroz शफी को गेंदबाजी करवाते हुए, जो कि नए बल्लेबाज हैं, Zishan को रिप्लेस किया है in the middle of the ground. पहली गेंद डॉट. So after being struck for 2 back-to-back boundaries, Zishan Feroz has made a very good comeback. Dot, wicket, dot. Or this could have been another one. This could have been another one. But slipped away and races towards the boundary line for a boundary. Unlucky rahe Zishan Feroz is aakhri गेंद पर. But nonetheless, I would still say that he was very tight after being hit away for the 2 boundaries on the first 2 deliveries. After 7, Bank Islami 72 for 3. अब्दुल आहद आए हैं वापस जनाब. पहले ओवर में इनके 15 रन्स कंसीड हुए थे. देखते हैं इस ओवर में क्या करते हैं. 1 run off the very first ball. इस बार कवर्स के ऊपर से बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे. गेंद को फिजा में बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकना चाह रहे थे, लेकिन कनेक्शन ना बना पाए शफीक. इंटेंट दिखा रहे हैं मस्ट से. दिस टाइम देयर वाज अ कनेक्शन एंड अ वेरी गुड वन. फील्डर के रीच से बाहर गेंद गई बैकवर्ड्स पॉइंट के रीजन में 4 रन्स के लिए. फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. दिस सेड फॉर अ रीजन लेडीज एंड जेंटलमैन. आप हिम्मत दिखाएंगे तो ही कुछ होगा. हरकत में ही बरकत होती है. अब्दुल आहद, शफीक सिमिलर रीजन में खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार नाकाम रहे. And let me tell you, the ball was not that far away from an outside edge. He could have been gone. He could have been gone. फिर से सिमिलर गेंद सिमिलर रीजन में खेलने की कोशिश, लेकिन उस तरह का कनेक्शन नहीं बना पा रहे जिस तरह का
पहले बाउंड्री जड़ते हुए बनाया था। 3 डॉट्स, 1 बाउंड्री, 4 गेंदें खेली हैं शफीक ने इस ओवर में। एंड मेक इट अनदर वन लेडीज एंड जेंटलमैन, 5 डॉट्स, आई बेग योर पार्डन, 4 डॉट्स, 1 बाउंड्री, 3 डॉट्स टू फिनिश दिस ओवर। अब्दुल अहद ने सिर्फ और सिर्फ दिए 5 रन 9 ओवर के बाद, आई बेग योर पार्डन 8 ओवर्स के बाद। रन हैं 77, विकेट्स गिर चुकी हैं 3 फॉर बैंक इस्लामी। जीशान फेरोज वापस अटैक में आते हुए, कंटिन्यूइंग हिज स्पेल, कवर्स के ऊपर से खेल दिया है जी, इनसाइड आउट एंड अनदर बाउंड्री टू रिजवान्स नेम। क्या जीशान फेरोज फिर से पिछले ओवर की तरह पहली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज कंसीड करेंगे और फिर एक विकेट हासिल करेंगे? श्योरली नॉट, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, श्योरली नॉट। Can he come back like he did in the last over? फिर से बिल्कुल पिछले ओवर की तरह ही लूज डिलीवरीज करवाते हुए जीशान फेरोज, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही लूज करवाते, जिसकी वजह से एम्पायर अपनी बाहें फिजा में खोलने पर मजबूर हुए। वाइड का इशारा और एक क्विक सिंगल भी ले लिया बल्लेबाज ने इसी दौरान। शफीक नाउ फेसिंग फेरोज। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, काफी स्लो डिलीवरी थी, सीधा खेला शफीक ने नॉन स्ट्राइकर की जानिब, जिसने छलांग मारकर बॉल को डॉज किया और 1 रन का इजाफा हो गया इसी के साथ बैंक इस्लामी के लिए। Another flighted delivery. This time they run a quick single. Is it a run out? The keeper looks confident. The bowler looks confident. What is it going to be? I have a feeling that the on-field umpire is going to refer it to the third umpire. Let's have a look at the replay, shall we? Let's have a look here, ladies and gentlemen. From the front angle, I'm getting a gut feeling that he might have been out, but let's have a look at the side view. Let's have a look at the side angle. Here he collects the ball. The batter is nowhere to be seen in the frame. He's out. It's a very easy decision to make for the third umpire. He's gone for a long march. It's a very easy out for the third umpire to give. No. Wide का इशारा. Wide का इशारा. Zishan Feroz bamboozled by the call of the on-field umpire, क्योंकि उनको लगा था कि एच हुआ है. उन्होंने अपील की थी कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने suddenly out of nowhere बाहें खोलकर वाइड का इशारा दे दिया, leaving everybody in a state of shock. टाइट डिलीवरी. क्या 1 रन लेंगे? नहीं लेंगे जी, इस बार वो गलती नहीं करेंगे. इनको पता है कि AJR के फील्डर्स जरा भी स्लॉपी नहीं है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को वो जाने नहीं देते. Second last ball of this over of Zishan Feroz, once again keeping it neat, keeping it tidy, keeping it tight towards the stumps. 1 ही रन का इजाफा होगा.
अब्दुल अहद वापस आए हैं अपना तीसरा ओवर करवाने। पहला ओवर काफ़ी महंगा रहा था इनका, दूसरे ओवर में महज 5 रन दिए थे और तीसरा करवाने आए हैं। He's made a good comeback after being very expensive on the very first over. इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के जानिब दौड़ते हुए बाहरी किनारा लगा है जी, और 4 रन हासिल होंगे। फ्लैश ही शायद आकर इस गेंद को रोक सकते थे। Add 4 to the scorecard of बैंक इस्लामी। 90 पर पहुंच चुकी है इसी के साथ, इस बाउंड्री के साथ। और अचानक से 219 का टारगेट ज़रा इम्पॉसिबल सा नज़र आते हुए बैंक इस्लामी के लिए, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई मिरेकुलस किस्म की इनिंग्स देखने को हमें मिल जाए, जाहिद या रिजवान, इन दोनों में से भी किसी एक की जानिब से। डॉट 4 डॉट। चौथी गेंद पर क्या होगा? आई थिंक इट विल बी अ सिंगल। नेवर माइंड, इट्स अ डॉट। It's a dot galore over here. पांचवी गेंद थी, जोरदार स्ट्रोक, और इस बार the fielder was way too far away to stop this one. It was way too quick for him. Zahid gets a boundary to his name. Second one of this over. With 1 ball to go, 1 ball to spare. Oh, he stops it, ladies and gentlemen. A good stop. 1 run to finish the 10th. After the first half, Bank Islami is 95 for 4. Zishan Feroz continuing his spell, तीसरा ओवर करवा रहे हैं। The captain is showing his belief in Zishan. Ooh, could have been close, but no cigar. Zishan must be eyeing another wicket. He's bowling to Rizwan, who has played 16 deliveries and scored 15 runs. Loose ball. Oh my God, Rizwan must be unhappy with himself with that one. Number 1, he should not have played it. Number 2, even if he was going to play it, it should have been an easy boundary. He is not happy with himself.
I wouldn't be either. Once again, a slingy sort of an action. Vishan Feroz ka.
Ladies and gentlemen, I was feeling that there was a wicket coming, and so it did. Zishan Feroz gets another one. Rizwan gets caught behind. The umpire raises his finger in the air, signals it out. He has to depart. Bank Islami has gone for a review. They've gone to the third umpire. Let's have a look at the replay. We don't really have the Sneeko or the Ultra Edge. So let's see what we can conclude from this replay. It was a flighted delivery, and the view is completely blocked by Zishan Feroz. This one is going to be a tough one for the third umpire. Good luck with it. Let's see what we can do. Ooh. But the interesting point is that the wicketkeeper collected the ball from ahead of the stumps. He collected the ball from interesting to say the least. His hands were not behind the stumps when he collected the ball. Nonetheless, it's been given out. Rizwan has to depart. It's 119 for 5 Bank Islami. शमाइल आए हैं जी क्रीज पर। फैसल टाउन ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हैं जी। देखते हैं कि इस सिचुएशन को किस तरह मैनेज करते हैं। ऑलमोस्ट पहले ही गेंद पर चलते बनने वाले थे जी। जिशान फेरोज के अभी तक इस ओवर में कोई भी रन नहीं आया, बट एक विकेट जरूर आई है। इज इट गोइंग टू बी अ विकेट मेडन फॉर जिशान फेरोज? Oh, yet another swing and a miss from Shamail. 5 गेंदें, 4 डॉट्स, 1 विकेट. Zishan Feroz is bowling the over of his life right now. खुद ही रन दे दिया Zishan Feroz ने। अपने और विकेट मेडन के दरमियान खुद ही आ गए। वाइड की शक्ल में एक रन का तोहफा दे दिया है जिशान फेरोज ने बैंक इस्लामी को। आखिरी गेंद, आउट की अपील, बहुत बड़ी अपील। अंपायर अनइंटरेस्टेड। मुझे लगता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग में दरमियान में लाइन आई थी उसने थोड़ा सा कर्स कर दिया। बट इट इज व्हाट इट इज। अ डॉट टू फिनिश। Zishan Feroz's quota 4 overs. He completes his 4, getting 2 wickets and conceding 33 runs after 13. Bank Islami
120 for the loss of 5. Ladies and सज्जाद हुसैन सिंगर थे, लेकिन इधर सज्जाद has been brought back into the attack by the captain. पहले स्पेल में अपने 2 ओवर्स में 24 रन्स दिए थे, अभी पहली गेंद पर 2 रन्स दिए, लेकिन साथ ही दूसरी डॉट करवाई है जनाब. Never mind, it's been given a wide by the umpire. Ladies and gentlemen, let me tell you that the target is of 219 runs. 6.5 ओवर्स रह गए हैं पीछे और टारगेट है बहुत ज्यादा, रन्स हैं बहुत ज्यादा. और ओवरथ्रोज की शक्ल में तोहफा. जाहिद 15 गेंदें खेल चुके हैं, 28 रन्स बनाए हैं, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. बैंक इस्लामी के लिए ही आई थिंक इज द लास्ट बीकन ऑफ होप. ही कैन नॉट थ्रो हिज विकेट, ही इज डूइंग एवरीथिंग ही कैन to hit the ball long. He is coming down the pitch, he is swinging the bat wildly, but he is not being able to get a good connection between his bat and the ball. अभी भी 94 रन्स दरकार हैं और फिर से वाइड का इशारा अंपायर का. ऑलमोस्ट अच्छी गेंद होने वाली थी, लेकिन थोड़े सी अपनी लाइन में गलती कर गए सज्जाद. दूसरी वाइड इस ओवर की. अभी भी 3 गेंदें पड़ी हैं. क्या जाहिद फिर से स्टेप डाउन करेंगे? बिल्कुल, he does step down the pitch and this time he manages to get a good connection and he gets a boundary to his name. लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर हम जानते हैं कि जाहिद जो है हर गेंद पर ही he's gonna shimmy down the pitch, he's gonna attack the bowler, so why not follow him instead of giving him the room to free his arms? Why not attack his body? Once again room given and once again utilized quite brilliantly by Zahid. Loose back-to-back deliveries by Sajjad resulting in back-to-back boundaries. फिर से देखिए वही वाली बात कि जब आपको पता है कि बल्लेबाज ने आगे बढ़ना है, बड़ी हिट के लिए जाना है, तो आप उनको रूम क्यों दोगे? आप क्यों नहीं उनकी बॉडी को अटैक करोगे? समथिंग दैट आई कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड.
आखिरी गेंद इस ओवर की, जेंटली खेलना चाह रहे थे लेकिन कोई कनेक्शन नहीं हुआ. डॉट टू फिनिश द 14th after 14. Bank Islami is 134 runs for the loss of 5 wickets. कामरान रियाज आए हैं जी इस इनिंग्स का 15वां ओवर करवाने और अपना पहला ओवर, पहली गेंद डॉट रही, दूसरी गेंद फिर से डॉट. शमाइल इस सिचुएशन को जरा बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे. फिर से बल्ला घुमाया था लेकिन कोई कनेक्शन नहीं अभी तक कर पाए हैं शमाइल अपने बल्ले का इस गेंद के साथ. He is yet to get off the mark as this has been signaled a leg by from the umpire. 6 गेंदें खेल चुके हैं, 0 पर बैठे हैं शमाइल, लेकिन अब आ चुके हैं द डेंजर मैन जाहिद ऑन स्ट्राइक. 19 गेंदों पर 36. आखिरी उम्मीद की किरण बैंक इस्लामी की. 33 गेंदें रह गई हैं पीछे. फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, इस बार रोक लिया फील्डर ने. स्लॉपी रहे जिसकी वजह से वापस स्ट्राइक हासिल कर पाएंगे जाहिद. कामरान रियाज जरा भी खुश नहीं इस फील्डिंग एफर्ट से, एंड राइटफुली सो. नोबडी लाइक्स मीडियोक्रिटी. फिर से आगे बढ़े, फिर से बड़ी शॉट की कोशिश. इस बार कामरान रियाज का हाथ लग गया गेंद पर जिसकी बदौलत रफ्तार में थोड़ी कमी आई. 1 ही रन का इजाफा होगा और अब शमाइल आ गए हैं. द क्वेश्चन इज, विल शमाइल बी एबल टू गेट हिज बैट टू द बॉल? विल देयर बी अ कनेक्शन बिटवीन द टू? कैन ही गेट ऑफ द मार्क और विल ही बी गिवन आउट? देयर इज अ कनेक्शन लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड देयर इज अ प्रीटी डिसेंट वन. बाउंड्री लाइन के जानिब गेंद गई लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे. 1 रन का इजाफा होगा और इसी के साथ ओवर का इख्तिताम. स्ट्राइक हासिल करेंगे शमाइल. आफ्टर 15, 139 for 5. अब्दुल अहद आए हैं जी अपने कोटे का आखिरी ओवर करवाने. सो फार ही हैज बोल्ड 3.
and conceded 29 runs without any wicket. शमाइल का फिर से अच्छा कनेक्शन, पहली 6 गेंदों पर बल्ले को गेंद के साथ टच करने में भी नाकाम रहे थे, लेकिन आखिरी 2 गेंदों में डिसेंट कनेक्शन रहा है जनाब। सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट की और अब आए हैं वापस स्ट्राइक पर जाहिद 21 पे 29। रिक्वायर्ड रन रेट 16 से भी ऊपर जा चुका है। 16.34 का रिक्वायर्ड रन रेट है जनाब बैंक इस्लामी को। अगर ये कॉन्टेस्ट जीतना है तो हर ओवर में 16 से ऊपर रन्स बनाने पड़ेंगे। इज इट पॉसिबल? यस। इज इट हार्ड? एब्सोल्युटली। कैन दे डू सो? द टाइम विल टेल. All of the responsibility lies on the shoulders of this young man on your screen, Mohammad Zahid, who shimmies down the pitch once again. Yorker length बना दिया था गेंद को खुद ही, दूसरे के लिए भाग रहे हैं। अगर डायरेक्ट हिट होती तो शमाइल वापस जाते पवेलियन में, लेकिन lucky for him it was not. Zahid will maintain the strike. Required run rate keeps climbing up, keeps getting higher and higher. Zahid, let me have a wild guess, will shimmy down the pitch once again. No, he will not. Rather, he will make room. And fortune favors the brave, as they say. He gets an inside edge and the ball races away to the boundary line, and it's a 4. Look at that. रूम बनाया था अब्दुल अहद ने, उनको फॉलो किया, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। फाइनल लेग रीजन में 4 रन्स के लिए। लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन। AJR ने 15 एक्स्ट्रास दे दिए हैं अपनी इस इनिंग्स में। समथिंग नॉट टू बी वेरी प्राउड ऑफ। फिर से आगे बढ़े थे, आगे बढ़कर खुद ही गेंद को यॉर्कर बना दिया। फिर से दूसरे के लिए भाग रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी डिसीजन फॉर द अंपायर टू गिव थर्ड अंपायर के जानिब जाने की जरूरत भी नहीं। शमाइल ऐसे भाग रहे थे जैसे कि वो खुद आउट होना चाह रहे हैं। वेरी लेजी रनिंग आई मस्ट से, बट विद दैट शमाइल हेड्स बैक टू द पवेलियन आफ्टर स्कोरिंग 2 of 8, a very easy run out for the opposition. छठी विकेट गिर चुकी है जनाब बैंक इस्लामी की 146 रन्स पर। दो गेंदें रह गई हैं अब्दुल अहद के इस ओवर की। And look at that. What is that? Is that an owl? Is that an owl? Oh, it's a couple of owls. It's 3 owls, ladies and gentlemen. 3 उल्लू, 3 उल्लू आपकी स्क्रीन्स पर, and I'm referring to the owls. I don't remember the last time I saw an owl, let alone 3. It's quite a rare sight, I must say. फिर से फील्डर के हाथों में गेंद, 1 ही रन का इजाफा होगा। एंड नाउ इट्स द न्यू बैटर ऑन स्ट्राइक, मिस्टर अली तारक। 25 गेंदें रह गई हैं इस इनिंग्स की, इस मैच की रादर, और हदफ से अभी भी बहुत दूर बैंक इस्लामी। जितना लाहौर से कराची उतना बैंक इस्लामी अपने टारगेट से इस टाइम। क्या करीब आप आएंगे, या करीब आने की जिद्दोजहद में मजीद विकेटें गिरेंगी? अभी के लिए तो अंपायर का वाइड का इशारा जनाब। 1 रन को मजीद जमा कर दीजिए स्कोर कार्ड में। Abdul Ahad will need to reload this one. Oh, it's close, but the umpire is not interested.
Neither is the wicket keeper or the bowler, for the matter of fact. After 16, it's 149 for 6. कामरान रियाज continues his spell. पहली गेंद, एक रन का इजाफा जाहिद स्ट्राइक पर नहीं. अभी बैंक इस्लामी के लिए बेहतरीन यही होगा कि जितनी हो सके जाहिद के पास स्ट्राइक रहे. सिर्फ तभी मेरे ख्याल से बैंक इस्लामी हदफ के शायद थोड़ा सा पास आ पाए. But for now, it's the new batter on strike, Ali Tariq, who does have the power to hit the ball big. And he's been bowled. He's been bowled, ladies and gentlemen. There was a very wild swing. There was a very wild swing, but no connection at all. And look at him walking back to the pavilion. Chalo, serious. Ladies and gentlemen, Ali Tariq was the last batter who had to go back to the pavilion after a very wild swing of the bat where there was no connection, and now it's Waqas who's come to the middle of the pitch. Let's see what he does. Is Bank Islami going to be bowled out by AJR? Or is Zahid going to do a miracle for them? Good field, young man in the deep. तीन गेंदें रह गई हैं कामरान रियाज के इस ओवर में. अभी तक 2 रन्स आए हैं, 1 विकेट आई है. नाउ इट्स द डेंजर मैन जाहिद ऑन स्ट्राइक. बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट, और एक और 6. और इसी 6 के साथ जाहिद की हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल हो चुकी है. लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट अ प्लेयर ही हैज बीन. सिंगल हैंडेडली बैंक इस्लामी को ऑक्सीजन की तरह सपोर्ट देते हुए. मोहम्मद जाहिद फॉर यू, 54 of 27 deliveries. Where everyone else failed, he stood tall and strong. लेकिन जाहिद को एक अजूबा ही करना पड़ेगा यहां पर अगर वो बैंक इस्लामी को जिताना चाहते हैं. फिर से शिमी डाउन द पिच, फिर से ऑफ साइड की जानिब खेला. 2 रन्स लेना चाहेंगे लेकिन उनके पार्टनर ने मना कर दिया. जनाब आप रुकिए, हम खेलते हैं, हम दिखाते हैं आपको कि बाउंड्रीज किस तरह लगाते हैं. लेट्स सी लास्ट बॉल, कामरान रियाज टू मिस्टर वकास. व्हाट इज इट गोइंग टू बी? आई थिंक इट्स ईदर गोना बी अ विकेट और अ बाउंड्री. व्हाट डू यू थिंक गाइस? Drum roll. Ooh, and it's nothing of the two. Or maybe it is. And it is, ladies and gentlemen. I was right. I told you.
It's either going to be a wicket or a boundary, and turns out it's a run out. And guess who? It's Zahid who has been run out, if I'm not mistaken. Let's have a look at the replay. There was an inside edge. Hamza, the young man, hit it straight, hit it direct, hit it onto the stumps. Oh, let's have a look at the replay once again, shall we? Hamza was the young man. Did he hit it in time? Did the batter make it back? Let's see. His bat is there in the frame. And is it an out or is it a not out? The next frame will tell us the whole story. I think that he's made his way back to the crease. I think he survived. What is it going to be? What has the third umpire said? And it's a not out, ladies and gentlemen. The third umpire has given his verdict. It's a not out, and after 17, Bank Islami is 158 for 7. Hamad is the new bowler. Flighted.
Gentlemen, welcome to the post-match presentation. It was AJR versus Bank Islami where AJR reigned supreme. They won the contest by 47 runs and the credit goes to the whole AJR team, but specifically one guy who stood tall and supreme above everyone. It was Mohit Riaz. Round of applause for our man of the match, Mohit Riaz. Mohit, Shafiq Saab will present to you, the captain, Bank Islami squad, your prize for the Man of the Match award. Chooser from the MCL and SMM. And these shoes are from MCL. Mohit, if I could have 2 seconds with you. Mohit, इससे पहले भी मैं एक मैच में आया था, उसमें भी आपने 100 लगाया था, आज भी आपने 111 बना दिए. What is the key behind you performing so consistently? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है. उसके बाद कुछ इनिंग्स हो गई थी कि बड़े रन्स नहीं हो रहे थे, लेकिन आज यही माइंडसेट के साथ आया था कि बेसिक पे रहूँगा, बॉल टू बॉल खेलूँगा और इनिंग्स को लंबी लेके जाऊँगा. तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा स्कोर हुआ है और कम बैक हुआ है. What's it like, you know, doing such good partnerships with your father on the pitch? वो गाइड करते रहते हैं साथ साथ, तो वो काफ़ी हेल्प होती है इनिंग्स को बिल्ड करने में, और मतलब कि वो साथ साथ लेके जाते हैं गेम को, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करता है. तो इसलिए 100 भी होता है ज़रूरी, मतलब कि मेरे होता है कि अगर मैं 50 क्रॉस कर दूँगा तो 100 करूँ इंशाल्लाह. तो बस ये उनकी सपोर्ट है. So thank you very much, Mohit, for your time and good luck for the rest of the tournament. I would like to call Mr. Shafiq, the captain of Bank Islami squad. Shafiq, tough luck, walaikum. Not the result you would have expected. Tell me, where do you think you guys went wrong? Actually, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि we always love to play MCL's tournaments. Reason being कि हमारी एक mindset और strategy MCL के साथ, this is second time हमने MCL का पहला टूर्नामेंट भी खेला था और this is second, और हम उसमें भी खेलने जा रहे हैं. So we are committed as professionals कि हम इसमें, because we are learning through the corporate cricket. दूसरा मैं बताऊंगा कि AJR is one of the tough teams or good teams, or we are new entrant, and being new entrant we are always learning through the games. So और हमने मेरा ख्याल है थोड़ा सा यूज़ किया, क्योंकि हमारे while we were batting we had a plan कि we can chase it, we have a stuff, we have a potential, but जो हमारा पहला विकेट गिरा, अगर हम उसको उसके जो स्कोर हैं अगर उसको प्लस कर लें तो we were around to win the match. I agree with you, Shafiq Saab. Thank you very much for the kind words. And indeed, MCL is setting standards when it comes to corporate cricket in Pakistan. Now I would like to call the captain of the AJR squad to come and have a word with us. Assalamu alaikum, sir. So first of all, congratulations. And where do you guys think आपके key to success क्या रहा आज के मैच में? And was the pitch really that easy? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिल्कुल ठीक है आपने कि pitch was not easy. Pitch was a bit difficult. इसमें 2 outstanding innings हुई हैं, एक हमारी तरफ से मोहित की और एक नवीद की. I mean we were lucky to get him out early. I mean he was playing so well. नवीद की बात कर रहा हूँ मैं बैंक इस्लामी से, और जिस तरह वो खेल रहे थे, 2 couple of overs अगर वो अंदर रहते तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाना था. बहरहाल we bowled well, we fielded really well, we took all the catches, and I think Bank Islami, commiserations to them, they played really well, but I think हमने टॉस जीत के जो बैटिंग का फैसला किया वो बहुत अच्छा था कि रन से जब बोर्ड पे हो जाए ना तो उसका प्रेशर होता है, तो 219 रन चेज करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट. And indeed, it was quite a statement that you sent out to all the rest of the teams. And once again, thank you very much for giving us your time, and thank you to all of you for watching this tournament. There's a lot more exciting cricket to come. Till then, stay tuned.